39, 40. You, as an investor, had purchased a 4-month call option. So this is a 4-month call option on equity shares of X of 10, of which the current market price is 132 and the exercise price is 150. You expect the price to range between 120 and 190. The expected share price of X Limited and the related probability. So 120 to 190 के बीच में ये सारे prices हो सकते हैं with these probabilities. चलो, compute the following. Expected share price at the end of 4 months. ये तो easy है. The expected price into the respective probability, right? So A expected share price after 4 months is 120 into 0.05 plus 140 into 0.2 plus 160 into 0.5 plus 180 into 0.1 plus 190 into 0.15. One? ये हो गया. Then B. What will be the value of the call option at the end of 4 months if the exercise price prevails? क्या होगा call का value? If the exercise price prevails. अगर zero. Because if the exercise price prevails, then the option will expire at the money. If exercise price prevails on expiry, then the option will be expiring at the money. Hence its value on expiry will be 0. Now, ये जो third part है, this is controversial. See, I'll tell you what the institute has done. Then I'll tell you what should have been the right answer according to me, and then we will discuss why this part of the question is ambiguous. See, in case the option is held till maturity, what will be the expected value of call? Now, first let us see what the institute has done. They've said price, they want us to find the expected value of call. Okay. Price on expiry
then value of call, probability, expected value. Okay. Now price on expiry 120, 140, 160, 180, 190. ठीक है, और कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है 150. So that means 0, 0, 10, 30 and 40. This will be the value of the call. And probability 0.05, 0.2, 0.5, 0.10, 0.15. 0, 0, 5, 3, 6, 14. This is what the institute has done. Now, I'll tell you what the problem is. See, इन्होंने क्या पूछा है? In case the option is held till maturity, what will be the expected value of the call option? Now, see, अगर मैं एक कॉल खरीदता हूं, तो as of today, I will expect it to hold till maturity, right? Now, यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं. Are you asking me the expected value of the call option today, or are you asking me the expected value of the call option on expiry? क्या मांग रहे हो, right? वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है. अच्छा, now let us take each one of them. अगर तुम टुडे की बात करते हो, right? So then इन लोगों ने क्या किया है? इफ यू नोटिस, हम लोग बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल में व्हाट डू? वी टेक द वेरियस प्राइसेस ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी, सॉरी वैल्यू ऑफ कॉल, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन वी डिस्काउंट इट. Remember, that's how we solve the risk neutral. What we do is we present it in a horizontal form. Value of call on expiry. If market price goes up to so much, this into the probability. If it goes down, then 0 into that probability. Sum total और उसका discount करते हैं. Now, if they are asking value of call today, तो उन्होंने ये जो find out किया है, they have applied the risk neutral का concept. But what about the discounting? वो तो कर नहीं रहे हो, right? So that means I cannot take this as value of call today. Okay, तो आप बोलोगे नहीं सर, value of call today नहीं मांगा है, they've asked the value of call on expiry. Now, if you are asking me the value of call on expiry, then remember, as on expiry, only one price can prevail, right? See, because if I ask you the price of ITCs 6 months from now, you might say, sir, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है. लेकिन at the end of 6 months, on that day, if I ask you, what is the price of ITC today? एक ही price होगा, right? So on expiry, there can only be one price, and that price we have already determined applying the probability as 160.5, which means the value of the call on expiry would be 10 rupees 50 paisa. 150 का strike price है. That should be 10 rupees 50 paisa. पर इंस्टीट्यूट का आंसर तो वो नहीं है. See, इंस्टीट्यूट ने खिचड़ी पका दी है, right? I mean, they have answered the question neither here nor there. Okay, now, I mean, क्या बोले इसको? अभी expected value of call they say is 14, but 14 कब भैया? आज है तो फिर इसको डिस्काउंट करो. और बात की बात है, आज का नहीं है, बात का है, तो फिर ये आना ही नहीं चाहिए, 160.50 से करना चाहिए. 10.5 14 हाँ, 10.5 14 होगा. Then 10.5, I mean, it wouldn't match. Acha, now you see this? Look at part B, what they have done. If the exercise prevails on maturity, मतलब maturity के दिन the price equal to
एक्सरसाइज प्राइस, तो वैल्यू ऑफ कॉल 0 निकाला तुमने, राइट? तो सेम फंडा लगाओगे, वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन एक्सपायरी वो तो ऑलरेडी हमने डिटरमाइन कर लिया 160.5, तो फिर कॉल का वैल्यू तो 10.5 होना चाहिए। और तुम बोलते हो नहीं मैं एक्सपायरी के दिन की मांग नहीं रहा हूं, आज का मांग रहा हूं, तो फिर ये 14 बराबर है, लेकिन फिर उसको डिस्काउंट करो, राइट? सो दिस सोल्यूशन इज, पता नहीं, इट्स अ हाफ कुक्ड सोल्यूशन, neither here nor there, but this is what the institute has done. ये लिख लो। We are done. Okay. Now let's look at next question. Acha, before we attempt the next question, remember for valuing options, there are only 3 methods in the world. There is no fourth method. And the 3 methods are riskless, risk neutral, Black-Scholes. चौथा कुछ है नहीं. Okay? ये चीज याद रखना when we do fourth. Okay. Give question 41. Given the following, strike price is 400, current price is 370, time till expiry is 6 months, risk free rate is 5%. अच्छा एक काम करते हैं, सुन, 41 के पहले ना 42 करते हैं, then we'll do 41. Let's do 42 first. I mean, it's same sum variation है. Strike price, given the following, strike price 180, current price of the stock 200, time till expiry 1 year, risk free rate 10%. Calculate the theoretical minimum price of European call option. And if the option is trading at 30, how can an arbitrager make profit? How will you calculate the price of the call? कॉल का वैल्यू बताओ. बोलो, निकालो. Which model will you use online? Black-Scholes. Okay, निकालो. नहीं का, यहाँ पे क्लासरूम में सब बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन तो है नहीं सर. तो कौन सा मॉडल लगाओगे? यस, चार्मी, रिस्क न्यूट्रल. ओके चार्मी, करो रिस्क न्यूट्रल. हाँ हाँ चार्मी, रेंज का है. हाँ, रेंज भी नहीं डिफाइंड है.
राइट? तो रिस्क न्यूट्रल तो कर नहीं सकते हो। तो और मैंने क्या बोला था कि बस 3 ही मॉडल हैं, चौथा कोई है नहीं। ओके, नाउ सी दिस, इन लोगों ने क्या निकालने बोला है? सॉरी, थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ कॉल। दो चीजें, थियोरेटिकल, ओके, नाउ थियोरेटिकल मतलब किताबी। ओके, अच्छा, even when doing Black-Scholes, if you remember when I started Black-Scholes, I said, boss, how did the Black-Scholes model start? Let's say there is a stock whose current market price is 80 and there is a call with a strike price of 60. So what's the value of the call? 20 plus something, है ना? तो ये 20 कैसे निकाला आपने? Spot minus exercise, right? But then Black-Scholes वाले ने क्या बोला कि भैया ये दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला फिर? PV of X, यहां पे भी अच्छा, ये मिनिमम प्राइस क्यों बोला जा रहा है? मिनिमम प्राइस का मतलब ये हो गया कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? नहीं, और कुछ? एक मिनट, आपने कॉल का प्राइस क्या बोला? 80 माइनस 60 है, पर कॉल प्रीमियम का दो कंपोनेंट क्या होता है? इंट्रिंसिक और टाइम। तो ये आप जो 80 माइनस 60 बोला वो तो खाली इंट्रिंसिक बोला, टाइम किधर है? Where is the टाइम वैल्यू है? तो इसका मतलब जो आप 20 बोल रहे हो, और रिमेंबर मैंने जैसे ही आपने बोला 20, ऐसे 20 प्लस समथिंग, दैट मीन्स जो 20 है वो तो मिनिमम वैल्यू कॉल का उतना होना चाहिए, उसके ऊपर ही और कुछ होगा, राइट? एंड देव आस्क्ड अस द थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ कॉल, दैट मीन्स spot minus PV of X. So spot is 200 minus PV of X, 180 into 1 upon 1.10, because T is 1 year. How much? 26.36. 36.337 आएगा ना? 180 divided by 1.1 minus 200. हाँ, 36.36. ये आपका थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ अ कॉल। लेकिन क्या ये कॉल, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉल लाइक दिस and go into the market and do arbitrage or speculation? No, because this value of call, it's bookish value, it's किताबी बात है, इसमें आपने volatility नहीं ली है। Okay, now if you realize both risk binomial model and Black-Scholes consider volatility. Binomial क्या बोलता है? प्राइस इतना भी जा सकता है, इतना भी जा सकता है, that's volatility, right? Black-Scholes standard deviation लेता है. So without considering the volatility of the stock, you can't really find the correct value of an option, right? तो ये जो आपने कॉल वैल्यू निकाला, this is just that theoretical minimum price, बस। Okay, and on this basis they are saying if the option is trading at 30, how can an arbitrager make profit? Okay. Now first of all, the starting point for this sum is this price which you have found is a childish price. Oh. But considering that this is the price, right, बस यही है जो है, and they are saying if the option is trading at 30, what would you do? क्या करोगे आर्बिट्राज के लिए? If the option is trading at 30 and the value as per you is 36.36, sell, buy at 30 and sell at 36.36. 36.36 is not even there in the market.
to buy the हाँ, और आपको आर्बिट्राज करना है ना, तो और एक एक्शन क्या है? You'll buy call and हाँ बोलो, sell stock because buying call is bullish. दूसरा एक्शन आपको bearish चाहिए. You can't do buy call sell call. तो position square off हो गया, right? So buy call and there's no way you can do anything about put. Put का तो कुछ है नहीं, right? So that means arbitrage profits. एक minute. Since call is trading at 30, it is underpriced and now I'm leaving some space here. We'll need to write something here, but वो बाद में करेंगे. And arbitrage gains can be made as under. Now let's do something. What is the price of the stock? 200 ना, तो एक काम करते हैं. Let's take prices of 120, 180, 200, 250, 300. Now remember, normally when it came to binomial, we did arbitrage. We took that two price range as price on expiry, right? But here we don't have the price range. So I'm just taking a few lower ones and a few higher ones. Okay. Now let us see what happens at each one of them. Day one, we are going to buy call. Now if you buy call, 30 is your outflow. And you are going to sell stock. If you sell stock, stock ka price today is 200. Acha, how much arbitrage profit are you going to make? एक minute. Arbitrage gains of rupees 6.36. Now you'll have to finally show me the 6.36 ka figure. Like this is 180. Net inflow on day one. फिर day 365. Call purchased if exercised, squared off. That is now sold, resulting in inflow of
ये आपका आउटफ्लो हुआ, तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? लॉस आ रहा है क्या? डे वन को इनफ्लो 170 हो रहा है और आउटफ्लो ऑन डे वन इतना हो रहा है। लेस, एक मिनट, इनफ्लो ऑफ डे वन, फिफ्टी, 10, 10, 10, 10, इंटरेस्ट एट 10%। ये शशांक, आपका डे वन को इनफ्लो हुआ था ना 170 का, तो उस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्नड ऑन 170 at 10%, 17, 17, 17, 17, 67, 7, 7, 7, 7, लेकिन अभी भी 6.36 तो नहीं हो रहा। 6.36 कहाँ से रहा? अच्छा, ये 6.36 जो प्रॉफिट निकाला है, ये आज का प्रॉफिट है कि एक्सपायरी के दिन का प्रॉफिट है? एक मिनट, ये 36.36 आपने कैसे निकाला? 36.36 इज द वैल्यू आज का ना, स्पॉट माइनस पीवी ऑफ एक्स की है 36.36 एंड द कॉल इज ट्रेडिंग एट 30, तो आपने बोला 6.36 प्रॉफिट बनेगा, तो 6.36 आज का प्रॉफिट है कि ये एक्सपायरी के दिन का प्रॉफिट है? आज का। और ये जो 7 रुपया आपने निकाला, ये कब का प्रॉफिट है? एक्सपायरी का। कैसे? हाउ डू यू से दैट दिस इज डे 365 डे प्रॉफिट? नहीं, और कुछ? प्रॉफिट दिखा रहा हूँ सी, हाँ, यस, हाँ, इंटरेस्ट ऐड किया है आपने। जैसे ही इंटरेस्ट ऐड किया है मतलब ये प्रॉफिट तब का है, राइट? तो यू कैन कंपेयर दिस 7 with 6.36, so what do you need to do? Therefore, gains on expiry, value of gains today, इसका प्रेजेंट वैल्यू मैं 2 का लिख रहा हूँ, 67 into 1 upon 1.10, 7 into 1 upon 1.10, and so on. Now 7 into 1.10 will give you that only, no? 6.36. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बट ये आर्बिट्राज में तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज रिमेंबर द आर्बिट्राज का 3 रूल क्या थे?
प्रॉफिट लॉक हो जाना चाहिए, पर यहाँ प्रॉफिट तो लॉक नहीं हो रहा है. क्यों नहीं लॉक हो रहा है? Because this is not a perfect arbitrage model. Why is this not a perfect arbitrage model? Because the pricing itself was not perfect. जो आपने प्राइस निकाला था वो परफेक्ट ही नहीं था वो, है कुछ तो some childish value you found and you're finding this book value. Now tell me something. If the price of the stock ये 120 पे 60.91 हो रहा है, what will happen when the price goes down further down, say 100? What will happen? If this price, for example, goes to 100, the profit will increase. It will go beyond 60, right? But what if the price goes to say 400? 6.36. That means 6.36 is the minimum arbitrage profit. But remember, if your arbitrage is correct and as per the principles laid down, then this word minimum has no place in this sentence. आर्बिट्राज में there's no minimum maximum, बस उतना ही होना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट आर्बिट्राज मॉडल होता है, right? But this is based on the theoretical minimum price, and therefore this is your theoretical minimum arbitrage. You bought a call and you sold a stock. Acha, if you were doing an arbitrage using binomial riskless or risk neutral, what is the essential step for you to establish a riskless arbitrage? If you are using riskless or risk neutral, and you found out, let's say you're using riskless model, okay? You found out the value of the call and you compared it with the actual market price, saw that the call is underpriced. That means you bought a call, sold a stock, bought a call and sold a stock, right? But just by doing that, can you do the arbitrage? कि एक और calculation आपको करना है. क्या calculation करना है before you go to do the arbitrage? हाँ? नहीं, वो तो आपने कॉल का वैल्यू में डिटरमाइन कर लिया. सी हाँ, यस शशांक, अरे क्यों तुम लोग को स्ट्राइक नहीं कर रहा है? डेल्टा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना हाउ विल यू नो हाउ मच कॉल हाउ मच स्टॉक? यू हैव टू एस्टेब्लिश द डेल्टा, राइट? यहाँ पे देखो हमने डेल्टा वेल्टा कुछ नहीं एस्टेब्लिश किया है, तो वैसे भी ये आर्बिट्राज कुछ होने वाला नहीं है, और ये पूरा सम हवा हवाई है, राइट? फ्रॉम वैल्यू ऑफ कॉल टू दिस, right? So that is why this question very clearly says that theoretical minimum price निकालना और उसके बेसिस पे आर्बिट्राज करना. And ये step आपको immediately, see, it must strike you was that if I'm going through the binomial route or even the Black-Scholes route, अगर मुझे आर्बिट्राज एस्टैब्लिश करना है तो I need the hedge ratio, right? रिस्कलेस में डेल्टा कैसे निकालोगे? ऑप्शन स्विंग अपॉन ऑप्शन दिस थिंग. Black-Scholes में दिया तो हाँ, ND1 gives you that delta, उसके बेसिस पे करने का है. चलो, इसमें तो मेरा प्रॉफिट कितना भी हो सकता है ना, नहीं कितना भी मतलब क्या, स्टॉक नीचे तो जीरो ही जा सकता है. 16.91 से बढ़ेगा नहीं. हाँ तो वही बोला ना, 60.91 से बढ़ेगा, लेकिन मिनिमम तो 6.36 बनेगा ही बनेगा. आर्बिट्राज का डेफिनेशन नहीं बैठा. Okay, now let us look. Let us look. Can you find this out?
Question 41. Given the following: strike price 400, current price of the stock 370, time till expiry 6 months, risk free rate 5%. Calculate the theoretical minimum price of European put option. कैसे निकालोगे? एक एक करके निकाल के बताना मेरे को. What's the value of the put? $20.24. कैसे किया? ठीक है ना? Now you notice call में it was S minus PV of X, लेकिन put में it's PV of, and that is the reason why Black-Scholes में मैं दो मॉडल नहीं पढ़ाता. हाँ, because put में वो पूरा Black-Scholes मॉडल इधर उधर वो D1 F1 सब इधर उधर हो जाएगा है, और आपको एंड में यू विल नॉट रियलाइज कि साला किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, किस में कौन सा एक्सप्रेशन पहले आता है. नाउ दिस इज 400 into 1 upon 1.025 minus 370. $20.24. आर्बिट्राज क्या होगा? हाँ, नहीं, दो क्वेश्चन है. आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना होगा? 10.24. और आर्बिट्राज कैसे करोगे, क्या करोगे? खुद को सेल करोगे? यार मुझे अभी तक नहीं समझ में आता मैं कौन से दीवार पे जाके सर फोड़ू यार. आ, यार ये अंडर प्राइस ओवर प्राइस आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, क्या पुट को सेल करोगे कैसे बोला तुमने? या तेरे हिसाब से आईफोन का भाव 1.5 लाख होना चाहिए, आईफोन मार्केट में 10,000 में मिल रहा है, क्या करोगे? खरीदोगे ना? तो फिर कैसे बोल रहे हो? तुम्हारे हिसाब से पुट का वैल्यू 20.24 होना चाहिए, पुट मार्केट में 10 में ट्रेड हो रहा है, तो पुट बाय करोगे कि सेल करोगे?
और फिर दूसरा, हाँ, सेल स्टॉक। देखा, फिर दिमाग नहीं लगा रहे हो, फिर दिमाग नहीं लगा रहे हो। बाय पुट, बाय स्टॉक। सी, बाय पुट इज बेरिश। अब तुम सेल स्टॉक करोगे वो भी बेरिश हो जाएगा। सो घोड़े की तरह नहीं करने का, बाय दिस सेल दिस। It's if you're going to buy a put which is bearish, then you've got to buy a stock. If put is trading at rupees 10, it is underpriced, and arbitrage gain of rupees 10.24 can be made as under. एक काम करते हैं, रुको, इसका प्राइस कितना है? लेट्स से 350, 370, 400, 450, 500. Day one, you're going to buy put with the strike price of 400. This is 10 outflow. And you're going to buy stock. Going to buy stock outflow. Sorry, stock का price कितना है? 370. Net outflow on day one. Day 180. Put purchased. If exercised, squared off, that is sold, resulting in inflow of क्या आएगा इधर? Lapse. हाँ,
इसमें से less interest on 380 at 5% per annum for 6 months. 380 into 2.5%, 9.5. $10.5. But then this is the profit on expiry. Profit today. Its present value. 10.5 into 1 upon 1.025. 10.24. यहाँ पे बदल जाएगा. 59.02. 107.80. Which means, can I write this word here also? मिनिमम आपका 10.24 बनेगा, लेकिन इससे ऊपर हो सकता है. वो बाय के उसका जो प्रीमियम पे किया वो भी हमने बोरो किया हाँ वो बाय किया है हाँ प्रीमियम पे किया हाँ. बोरो किया नहीं ना, बोरो नहीं करने से नहीं. एक मिनट, अगर तुम बोरो नहीं किए होते तो डे वन का आउटफ्लो का कोई कॉस्ट नहीं है क्या? मान लो तुम अपने ही पैसे से फ्लैट खरीदते हो 10 लाख रुपए में, ठीक है, और उसको 1 साल के बाद 15 लाख में बेचते हो. तो जब प्रॉफिट गिनोगे, 10 लाख तुमने बोरो नहीं किया तो मतलब 5 लाख तेरा प्रॉफिट हो गया है क्या? पैसा जो फंसा उसका पैसा. सो इट डजेंट मैटर. एंड इवन डे वन को अर्लियर एग्जाम्पल में जहां पे हमने इनफ्लो था, वहां पे भी शो इंटरेस्ट अर्न ना. तो क्या हमने ये एज्यूम किया कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया था वो अमाउंट है? डजेंट मैटर, इनफ्लो है आउटफ्लो है, देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्ट कॉस्ट और एन इंटरेस्ट अर्निंग. Done? Huh? Okay. The next concept that we are going to learn is what we call as real options. Now, the term real option is misleading because real options actually refer to unreal options. Real options क्या है?
Real option is essentially application of option valuation techniques to capital budgeting scenarios. मतलब situation capital budgeting का है. And normally in capital budgeting we do cash flows discount करते हैं, NPV करते हैं. That is one method of evaluating projects. Now in certain situations we use the option valuation techniques, चाहे वो binomial हो या Black-Scholes हो, in capital budgeting scenarios. Now I'll give you a classical example. Patents are actually options. How are patents options? See, let's say you own a particular patent. Okay? So by virtue of owning a patent, what do you get? क्या मिलता है if you own a patent? Right to do something. है ना? Right to manufacture a product. Now, a right to do something is an option because you may do it, you may not do it. आपके सर के ऊपर तलवार तो है नहीं ना कि पेटेंट है तो मतलब आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. There are pharmaceutical companies which have lakhs and lakhs of patents registered in their name, but उनका product profile देखोगे, they only manufacture maybe 15 or 20 products. They have lakhs of patents registered. And I'm not exaggerating. Ranbaxy possibly would have 40-50,000 patents registered. But उनका product portfolio देखोगे 35 to 40. That's all they manufacture. Now, that means why have they registered the patent? Because they have decided that it may not be profitable to do it today. But that does not mean it won't be profitable to do it later. But then the question is, how do you decide whether to manufacture it today or whether to postpone it by 1 year? Right? Now, that is a typical capital budgeting scenario where we use options, because you have to understand something. A call or a put is nothing but a right to postpone your buying or selling decision. See, call up kharidte ho. What does a call give you? Right to buy the stock. When? Sometime in the future. What is the alternative to buying a call? You could have purchased the stock. You would have purchased the stock, but the purchasing of the stock is today. The call gives you a right to postpone that decision, right? But then, if you look at it from a capital budgeting scenario, let us say you have a project which has got a 5-year lifespan, 5 saal, or even patent. Let's say you register a patent in the year 2024. And that patent has got 10 years life. That means 2034, the patent will expire. Right? Now you are taking a decision whether to put up the plant today or whether to postpone it by 1 year. But understand, if you put up the plant today, then the life of the patent is 10 years. But if you decide to postpone it by 1 year, the life of the patent will only be 9 years. Right? Which means by exercising your right to postpone, you are actually losing out on 1 year's revenue. है ना? 1 साल का revenue आप खो रहे हो by virtue of this postponement. Now, see, for understanding patents, we need to discuss one more thing, but वो अपन आते हैं. We'll get into the problem. See, अभी कैसे बोलूं? Till last year, the chapter of capital budgeting was not there in CA5, right? So these kind of sums we used to do it in options. Okay, but this year you have capital budgeting as a part of the syllabus, and you will find that
even in that chapter, there are about 4 or 5 sums which are based on option valuation. Right? तो मैं क्या करता हूं, जिनका ऑप्शन हो गया है, right? When I'm taking that chapter, I do that sum with capital budgeting. मतलब ये सम यहां कर लेते हैं, फिर उधर करते हैं, लेकिन जिनका ऑप्शन नहीं हुआ रहता ना, एंड आई एम डूइंग कैपिटल बजटिंग फॉर देम, वो 4 सम छोड़ के रख देता हूं, ऑप्शन सिखाऊंगा, बिकॉज एट दैट टाइम I mean, they would have no way of understanding a right to buy, right to put up the project. उनको समझ में ही नहीं आएगा. Now, this year for you, this has now become an integral part of the chapter. Now, it doesn't really matter कि question paper में chapter wise तो question नहीं आता है, कहीं से भी दे देंगे, right? Now, the critical part with these kind of problems is problem देख के आपको 1% भी भनक नहीं पड़ेगा. You will not have 1% clue that this will involve option valuation techniques, because that problem will contain no terminology of options. Normally, option ka problem, how do you identify? Spot, strike price, standard deviation, right? The moment you see that, you know it's an option. But when it comes to this real option, na, प्रॉब्लम देख के आपको पता भी नहीं चलेगा दैट इसमें ऑप्शंस इन्वॉल्व होने वाले हैं. Maybe except in a few problem you might find the word standard deviation, but then standard deviation also comes in capital budgeting as it is volatility of the cash flows, right? So how to identify? No answer. You practice and maybe some देख के आपको पता चलेगा यार शायद इसमें ऑप्शन लग जाएगा. Okay, we'll see that. Let us take acha, and like I said, there are only 3 valuation models. So whether it is a capital budgeting scenario or whether it is a stock option model, तो 3 में से ही लगाना है एक आपको. Okay, let's look at question 38. You've written this down? एक मिनट, ये लिख लो this one. गया चलो अभी this is 42, 39, 38. 6. IPL is already in the production of fertilizer and is considering a proposal of building a new plant to produce pesticides. Suppose the present value of the proposal is 100 crores without the abandonment option. Now, what is this abandonment option? No. Abandonment option is something different. See, there are a lot of sectors which are quite unattractive for the private sector, जो typically government project लगाती है, right? But how does the government then incentivize the private sector to come and participate in those kind of projects? What does the government do typically? Subsidies. One of the ways of attracting it is subsidies. Okay. Now,
Another way is this abandonment option. Now let's build a hypothetical case. Let us say there is a particular industry जिसमें private sector आना ही नहीं चाहता है. So the government says, boss, I'll give you tax subsidies. Please come. But even with the tax subsidies, the private sector is not willing to come. Right? So then the government may say, boss, come and put up the project. If you don't like the project after 1 year or after 2 years, you can sell the project off. Normally, the project with subsidies have a lock-in period. है ना? बोलते हैं कि 8 साल के बाद से हम चालू करेंगे, वो सब रहता है. But the government, let us say, tells them, you come and put up the project. If you don't like it, you can sell it to anyone. Now the private sector guy will say, boss, you are saying if I can sell it to anyone, but मेरे को ही नहीं पसंद आया, तो और किसी को कैसे पसंद आएगा? मैं किसको बेचूं? तो गवर्नमेंट बोलेगा, don't worry, if no one else buys it, I will buy it from you at a particular price. That means as a promoter, you have got a right to abandon the project. Now this right to abandon, this will not come in your balance sheet, because this will be there in the contract which you enter with the government. Okay? Now, imagine this. You put up a project, you run it for 1 year, you don't like it. Okay? And you decide to sell it to someone else. Now, let us hypothetically presume that there is a someone else who's willing to buy this project. But understand, when that someone else buys the project, now he will also get, along with the project assets, he will also get a right to sell the project to the government. क्योंकि अब वो right उसको transfer हो जाएगा ना. Now, when you are going to sell the project, you are going to value the project. Now, how do you typically value the project? The value of all assets minus the value of all liabilities. But then understand, this project has got another asset which is not there in the balance sheet. The right to sell that project. It's a valuable asset, right? पर वो balance sheet में तो है नहीं. Will you give this asset free of cost? No. Then you will have to value it, right? That means you will have to value the abandonment option, which essentially mean, now understand, this abandonment option is very similar to having a put on a stock, right to sell the stock at a particular project, right to sell the project at a particular price, right? So this, suppose the present value of the proposal is 100 crores without the abandonment option. Now, when you say present value of the proposal, what can you equate it to in terms of option terminology? The present value of the project is 100 crores. Current market price. This is spot. Because understand, what is the current market price? It is nothing but the present value of future probable values. Right? Project में आप क्या निकालते हो? Present value of the future probable cash flows. So this is nothing but spot. Okay. The present value of the proposal is 100 crores without the abandonment option. However, if the market conditions for pesticide turns out to be favorable, the PV of the proposal, ये जो 100 crore है, PV shall increase by 30%. No. 130. On the other hand, if the market conditions remain sluggish, the present value of the proposal, मतलब ये 100 reduce हो जाएगा 40 से 60. In case the company is not interested in continuing the project, it can be disposed of for 80 crores. क्या है ये? Strike price. If the risk-free rate of interest is 8%, then what will be the value of the abandonment option? Value of put, right? Which model are you going to use? Risk neutral. You'll have to find the probability, right? Isme the only thing is present value of cash flows, which is
spot 100, disposal price, which is similar to strike price, is 80, R 8%, T कुछ दिया नहीं है तो 1 अच्छा एक मिनट. How did you start the risk neutral problem? Solving कैसे start करते थे? हाँ हाँ हाँ. No, let PU be the probability of. Now here when you are doing this problem, you have to be careful with the terminology. Here you will write let PU be the probability of PV of cash flows going up to 130, not current market price, because remember there's no current market price of a project. It's not traded, right? So let PU be the probability of PV of cash flows going up to 130 and PD be the probability of PV of cash flows going down to 60. Then what you used to write? Okay. Therefore, PD equals to 1 minus PU. Okay, then. Now you can't write current market price equals to PV of cash flows. You'll have to say PV of cash flows is equals to present value of future probable cash flows. That is 100 equals to 1 upon 1.08 into 130 PU plus 60 into 1 minus PU. So therefore PU equals to बताना कितना है? PU is 0.686. So we'll take PU as 0.69. हाँ हाँ
ये हाँ, value of abandonment option, this is nothing but put. इसका opposite क्या होगा? Value of abandoning the option, उसका opposite? The right to put up a project. Right to dispose of a project or right to put up a project. है? अच्छा, now ये सब में put call parity मत लगाना. Why? Why? हाँ, yes. हाँ, क्योंकि these options are not traded options where you say that call इतना प्राइस में है तो put इतना में होगा. इसमें अभी put है, हो सकता call है ही नहीं. Right to put up, there's no right to put up the project, there's only a right to sell the project. Right? So you can't apply put call parity in these cases. कि call का वैल्यू निकाल दिया फिर P plus S equal to call plus PV of X लगा दिया. Right to put up the project or right to sell the project is a capital budgeting scenario, no? पहले तो ऑप्शंस में जा रहा है. नहीं जाता है. See, अगर ये तो तुम ऑप्शन का चैप्टर में इसको कर रहे हो तो तुमको पता है, वरना भाई प्रोजेक्ट लगाना है कि बेचना है, शुड आई सेल ऑफ द प्रोजेक्ट. इट्स अ कैपिटल. अभी जैसा मान लो जेके सर थिंक्स ऑफ सेलिंग ऑफ द क्लासरूम्स, कहां से ऑप्शन आएगा दिमाग में? इट विल ओनली बी भैया इससे इतना कैश फ्लो आ रहा था, उसको डिस्काउंट करो, वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, उसमें से इतना कमाओ. इट्स कैपिटल बजटिंग सिनेरियो, राइट? ओके, नाउ एक मिनट, इसको यहां पे लिख लेना. दिस इज रियल ऑप्शंस एंड आई थिंक आप लोग का कैपिटल बजटिंग अभी तक हुआ नहीं है जी? मैंने तो नहीं लिया. हाँ, नहीं 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 नहीं. आप लोग का टेक्स्ट बुक में है ना कैपिटल बजटिंग? नहीं 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 नहीं. हाँ, एडवांस कैपिटल बजट है, वो नहीं हुआ ना. हाँ, यहाँ पे नोट लिख के रखना. ऑल्सो रेफर टू द रीजन इज, जब आप लोग प्रॉब्लम कर रहे होगे ना, आप सोचोगे या क्या यार ये चैप्टर में भी कुछ आ रहा है, फिर वो चैप्टर में क्यों आ रहा है? ये एसेंशियली उसी चैप्टर का पार्ट है. अभी पहले तो इसमें ही आता था. Okay. Online, anyone wants me to scroll up or down? No? Okay, chalo. Now this, again, real options. ABC Limited is a pharmaceutical company possessing a patent of a drug called Adrex, a medicine for AIDS patient. Being an approach drug, ABC Limited holds the right of production of drug and its marketing. The period of the patent is 15 years, after which any other pharmaceutical company can produce the drug with the same formula. Now see this. You've all heard this concept of generic medicines. Now, for those of you who haven't heard, see, generic medicines are medicines which are available normally at 1/5 or of the price of a regular medicine. Okay, but does that mean that these medicines are of inferior quality? No, you would be surprised that some of the generic medicines are being manufactured by companies like Cipla or Ranbaxy also. Now, typically what happens in the pharma industry? Let's say
you discover a drug. Let's say you are Ranbaxy, you discover a drug. So immediately you will register the patent. Now, once you register the patent, what happens is you are given a period of exclusivity. अगला 15 साल आप ही मैन्युफैक्चर करोगे, इसको कोई और मैन्युफैक्चर नहीं करेगा. लेकिन after 15 years, the patent is open. Anyone can manufacture. Now, typically what happens in pharma companies is that when you do a research for a drug, you spend billions and billions of dollars. Right? Now, let's say Ranbaxy spent $2 billion on a research of a drug. It discovers the drug, patents it. And that patent is now exclusive for 15 years. Which means in the next 15 years, Ranbaxy knows that no one else can manufacture that medicine. And its target will be to recover that 2 billion or 3 billion, whatever it has spent on research in that 15 years. But there it faces another problem. If it tries to recover that entire 2 billion within the 15 years, the pricing of the drug comes to maybe 70,000 a tablet. Then Ranbaxy knows that it cannot sell those tablets in the market. बिकेगा नहीं फिर. तो Ranbaxy क्या करेगा? It will bring the price down to affordable levels, which means it will have to recover that 2 billion beyond 15 years. बराबर है? Ranbaxy decides to do that and it starts selling the drug at maybe 1,000 rupees or something. Which means now it has estimated that it will recover the research expenses over maybe 30 years. ठीक है? अब वो पहला 15 years तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मैन्युफैक्चर नहीं करता, Ranbaxy बेचते जाता है. But the moment 15 year ends, what the other drug companies will do is they will reverse engineer. वो ड्रग लेंगे, उसको तोड़ेंगे and they will see what are the components in this and they will start manufacturing it. Now let us say Cipla does this or Johnson & Johnson does that. Right? Now the moment Cipla does it, remember Cipla will be able to sell this drug at 20 rupees and still make profit. Because उसने तो $2 billion खर्चा नहीं किया ना, वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग किया है. रिवर्स इंजीनियरिंग में कितना खर्चा होगा? लाख रुपया, 2 लाख रुपया. तो वो तो 20 रुपए में भी बेच देगा उसको. That is generic drug. जो आपको जेनेरिक दुकान में मिलता है ना, ये वो ड्रग है. And if you find a lot of generic drugs are being manufactured by Pfizer, Ranbaxy, Cipla, because the generic drug being manufactured by Ranbaxy is possibly one which has been patented by Cipla. And the generic drug which is manufactured by Cipla is a drug which is patented by Ranbaxy. Right? Now, actually, now understand what happens after 15th year. After 15th year, बेचारा Ranbaxy will be bleeding. Because उसको अभी भी 2 billion recover करना है. और वो 1000 में बेच रहा है. और आ गया Cipla मार्केट में 20 रुपया में. Will Ranbaxy be able to sell the drug now? No. So what does Ranbaxy do? No, it can't reduce. Shareholder दौड़ा देंगे. No, not sell patent. Patent कैसे बेचेगा? उसका कॉस्ट ही रिकवर नहीं हुआ. No. Now this is where the unethical practices in pharma industries come in. Ranbaxy will aggressively push that drug with the doctors, saying, recommend my drug. अगर आपके थ्रू 10 लाख का सेल हुआ, 1 trip to Maldives free, 1 car free. That is why you find doctors don't prescribe those generic medicines. डॉक्टर आपको हमेशा वो 5,000 वाला मेडिसिन ही बोलेगा, कभी वो 20 रुपए वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि वो 5,000 रुपए में उसको इंसेंटिव मिलता है बॉस. It's an unethical practice, which is why in most of the European countries and the developed countries, doctors are not allowed to prescribe a brand. They are supposed to prescribe the drug. Like India में doctors prescribe Crocin, right? US and all doctors prescribe paracetamol. तुम जाके बाजार में खरीद लो बस कोई पैरासिटामोल, मैं ब्रांड नहीं दूंगा. Because when you are pushing a brand, right, that means you are not considering what is the best for the patient, you are considering what is good for you.
So in the developed countries, they're not allowed to push brands, prescribe brands. But generic drug ले लेगा तुम pharma का. In fact, even in US and all, if you go and buy Crocin, no, you don't get it in this kind of strips. You get it in those plastic dabbas. वो अपना local doctor कैसा देता पुड़िया में बांध के, right? You get it in white dabbas. उसमें पैरासिटामोल लिखा रहेगा, वो जेनेरिक है. अच्छा, do you find this local? Do you know what ये जो local doctors आपको देते हैं ना पुड़िया में tablet wrap करके, हाँ? What tablets are they? They are the same Crocin, but non-branded. That is why they are able to give 50 रुपया में वो 50 रुपया लेता है बेचारा वो डॉक्टर, और उसमें वो मेडिसिन भी दे देता है. कैसे देता है? क्योंकि वो जो पैरासिटामोल खरीदता है ना, he doesn't buy it in strips. He buys it in boxes, loose. That's the concept of generic drug. Now, यहाँ पे, if you see this, the period of patent is 15 years after which any other pharmaceutical company can produce the drug. मतलब वो जो patent का life है ना, 15 साल. उसके बाद it's an open jungle. Okay? It is estimated that the company shall require to incur 12.5 million for developing and marketing the drug. Company के पास patent है, लेकिन if it wants to exercise that patent, मतलब exercise मतलब what? Exercise the patent मतलब do what? To put up the plant, develop that drug. I mean, marketing, developing, manufacturing. वो अगर करना है तो you'll have to incur 12.5 million. Now tell me, right to put up a plant. When you put up a plant, what are you going to do? You're going to buy plant and machinery and all. Yes, Mihika. You're going to buy plant and machinery and all, right? That means this gives you a right to buy plant and machinery at 12.5 million. Basically, it's a call option. And this 12.5 million is strike. Okay? For development and marketing of the drug, as per survey conducted, the present value of expected cash flow from the sale of drug during 15 years shall be 16.7. ये क्या है? Spot. 15 साल का cash flows का present value. Okay. Cash flow from previous similar type of drugs have exhibited a variance. Variance. How do you calculate variance? Is it? This is this. But remember, Black-Scholes के लिए we don't need this. Square root. Right? They have given the variance of the present value of cash flow. The current yield on treasury bond of similar duration is 7.8 R. Okay. Now, which model are you going to use? Black-Scholes. And understand, यहाँ पे एक और information है hidden, जो अभी आएगा. But here you realize possibly for variance, और वो भी तभी strike करेगा when variance you know is the square of standard deviation. There is no terminology relating to options. एक terminology नहीं है यहाँ पे option related. Strike, current market price, standard deviation, nothing. Okay, and there is one more hidden information here जो आपको पता भी नहीं चल रहा है, इधर है. I'll explain that and I'll give you a note for it. Dividend. यहाँ पे dividend है और वो कहीं पता भी नहीं है. Dividend मतलब dividend yield. Understand? Like I told you, a call option is nothing but a right to postpone the decision. And यहाँ पे supposing, okay, यहाँ पे you are basically evaluating the right to postpone the project because call is nothing but a postponement decision, right? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि what will be the value of this right to postpone. What if I postpone this project by 1 year? What will happen? Right? Now, just imagine this. If that project had a life of 2 years, right? If you decide to postpone it by 1 year, wouldn't you lose 50% of your revenue?
this right to postpone would result in a loss of 50%. That means basically 50% is 1/2, right? If the project had a life of 3 years, then the right to postpone it by 1 year would result in a loss of revenue of 1/3. 4 year, 1/4. 10 year, 1/10. 15 years, 1/15, right? That means if you postpone the project by 1 year, you will lose 1/15 of the revenue. Now remember, this loss of 1/15 is as good as loss of dividend, because when you are evaluating the postponement of a share buying decision, right? आप क्या करते हो? वो कंपनी अगर डिविडेंड देता है तो you used to adjust it from spot, ना? Reduce करते हो ना? Why do you reduce it? Because when you are postponing the decision to buy the shares, you will lose out on the dividend. शेयर होता तो आपके पास डिविडेंड आता, पर नाउ यू आर सेइंग नहीं, शेयर हम आज नहीं खरीदेंगे, 1 साल बाद खरीदेंगे, और उसके लिए आई एम विलिंग टू पे सो मच. बट व्हेन यू आर सेइंग दैट हम 1 साल बाद खरीदेंगे, यू आर आल्सो फैक्टरिंग द फैक्ट दैट डिविडेंड तो लूज होगा ना बॉस. इसीलिए हम उसको स्पॉट में से रिड्यूस करते हैं. तो यहां पे हाउ मच विल बी द डिविडेंड लॉस? 1/15. दैट लॉस ऑफ 1 year's रेवेन्यू 1/15. 1/15 कितना आता है? That is 6.67%. The dividend loss is in percent, it's not in absolute amount, right? So Black-Scholes model में which model are you going to use? Index वाला. Index वाला, because the dividend loss is in percentage. Absolute terms तो stock में होता है. So you are going to use the index wala model, right? Now here, and about this dividend, I'll give you a note at the end of the problem, right? यहाँ पे ये देखो, PV of cash flows is कितना है? 16. एक मिनट, 16.7. Strike, which is 12.5 million. T, 15 years. R, 7.8%. And dividend, refer note, ये बाद में दे देंगे. 1/15, 6.67%. Now the let's say patent gives us a right to put up a project anytime starting now to 15 years. Essentially, patent is a right to postpone the project this is similar to call option. Therefore, value of call is ND1 S E minus DT minus
ND2 to PV of X. ठीक है, अभी करके बताओ तो मेरे को इसको। सॉल्व करके बताओ। आपको मैं डिविडेंड का आदमी किया कि मैं मेरा राइट ये करता हूँ ना, नहीं ना, ये मतलब डिविडेंड के कि मेरा मैं मेरा पोस्टपोन करता हूँ एक साल का। बेसिकली पेटेंट वैल्यू करना मतलब यू आर वैल्यूइंग द राइट टू पोस्टपोन ओनली। और मैं नहीं, पर अगर अगर मैं आज ही प्रोडक्शन तो फिर पेटेंट का वैल्यू ही नहीं रह गया। सी इफ यू एक्सरसाइज द कॉल टुडे देन द कॉल एक्सपायर्स, नो बॉस। तो फिर उसका वैल्यू क्या डिटरमाइन कर रहे हो? तो तुम यहाँ पे पेटेंट यू आर डिटरमाइनिंग व्हाट इफ आई पुट इट अप नेक्स्ट ईयर। क्योंकि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 15 इयर्स का दिया है। बराबर है। अगर 15 इयर्स में मतलब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना, अगर मैं एक साल में अगर राइट तो कॉल जब वैल्यू करते हो यू आर वैल्यूइंग द स्पॉट प्राइस, यू आर टेकिंग द स्पॉट प्राइस, दैट इज इफ यू बाय द स्टॉक टुडे, राइट? बट यू आर यूजिंग इट टू वैल्यू द कॉल विच इज द राइट टू पोस्टपोन द डिसीजन। दैट इज अगर मैं स्टॉक आज बाय करूं vis-a-vis आई बाय अ राइट टू बाय द स्टॉक एट अ पर्टिकुलर प्राइस, राइट? तो तुम जो बोल रहे हो कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो तो आज का है, राइट? मैं इसको पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूं तो मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिडर करूंगा ना। स्टॉक में भी तो वही करते हो, आज खरीदो तो इतना, मैं फ्यूचर में खरीदने की राइट लेता हूं, लेकिन फ्यूचर में स्टॉक प्राइस तो डिफर कर सकता है, तो वो आ गया ना स्टैंडर्ड डिविएशन। जब वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ गुड निकालते हैं तो हाँ। हमारा जो टाइम होता है वो वेरी होता है ना, मतलब 90 डेज 180 डेज, इतना टाइम होता है उससे मेरा कॉलर। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे यू आर वैल्यूइंग द ऑप्शन 15 ईयर लाइफ, राइट? अच्छा, नाउ जब तुम 4 साल का डिविडेंड लेते हो, 4 साल का या 3 महीने का ऑप्शन लेते हो, डिविडेंड तो तुम करंट ईयर का ही लेते हो, 1 ईयर का डिविडेंड ना, जो करंट वाला। तो दैट मीन्स यू आर ओनली प्रिज्यूमिंग दैट स्टॉक 1 साल का डिविडेंड है। तो यहां पे भी जब तुम ये ले रहे हो, यू आर ओनली गोइंग टू इवेल्युएट व्हाट इफ आई पोस्टपोन इट बाय 1 more year. So should I do it now? Or see, अच्छा, now if you are holding the patent, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप खुद मैन्युफैक्चर करो या पेटेंट बेचो। How will you evaluate it? Exactly. मतलब मैं खुद आज से मैन्युफैक्चर करना चालू करूं तो क्या, या मैं इसको पोस्टपोन करूं तो क्या? तो हम यहाँ पे आज मैन्युफैक्चर करना है उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कैपिटल बजटिंग सिचुएशन हो गया। But I'm deciding, I'm thinking, what if I decide to postpone it by 1 year? What will happen then? Right? जब मैं पोस्टपोन करूंगा तो मेरा टीम 14 इयर्स होना चाहिए, क्योंकि मेरा रेवेन्यू तो 14 इयर्स के लिए जनरेट होगा। कौन सा? हाँ, जब मैं अगर एक साल के बाद पोस्टपोन कर, हाँ नहीं, what is the life of the option? 15 years. पर तुम्हारा स्टॉक का जो ऑप्शन होगा उसका हो सकता है लाइफ 4 साल हो, पर तुम डिविडेंड जो कंसिडर करते हो एनुअल डिविडेंड यील्ड कंसिडर करते हो ना, है? और उसके बाद कहीं ना कहीं तो T/12 आ जाता है ना बस, T/12 आ जाता है ना। सी इफ यू रिमेंबर वी वैल्यूड इंडेक्स ऑप्शन वेयर दे सेड डिविडेंड वाज 6% per annum, but you are valuing a 3 month option. तो बाहर इंटू 3/12 करते हैं ना, तो इधर भी आएगा ना। अगर जैसे कि तो राइट का प्रोजेक्ट है, ऐसे अगर पुट डाउन प्रोजेक्ट आ गया, पुट डाउन प्रोजेक्ट तो आएगा नहीं, राइट टू सेल द प्रोजेक्ट आएगा, वो तो हमने कर दिया उधर, उसमें ब्लैक शोल कहां से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कैश फ्लोज आपके आएंगे ही नहीं ना, उसमें तो कैश फ्लोज आप खोगे।
पर नाम ही पड़ेगा। that is the abandonment project.
क्या हुआ? No adjusted PV of cash flow. Meaning? Why adjusted PV here? Dividend is in yield, no? It's not in absolute values. Because what you are going to lose is a percentage of your revenue. I mean, 2 years project, if you delay it by 1 year, you're going to lose 50% of your revenue. 3 years, 33, 1/3. 4 years, 25%. So you're going to lose 6.67% of your revenues. So when dividend is in percentage, you can't adjust it from spot. Yeah, point 2897 आ रहा है. कितना 1.336 का क्या आ रहा है?
1257. एक मिनट 13 का 3 का 6 अच्छा 19 है क्या 8 आएगा ओके so 0.1258 divided by 0.4343 0.2897 0.2897 plus 21795 divided by 2.005 1.2315 1.23 0.8907 1.24 0.8925 for a difference of 0.01 there's a difference of 0.18 therefore 0.0015 0.0015 into 0.0018 divided by 0.01 0.0027 therefore MD1 at D1 equals to 1.2315 is 0.8907 plus 0.27 0.8907 plus 0.0027 8909 so 8910 D2 D1 minus standard deviation root D D1 1.2315 minus standard deviation root D 2. 7 का फिगर संभालना take it from the non-shaded table 7 में वो लिखा था हाँ 0.77 हाँ 0.78 0.77 अगर मैं ये टेबल पे देख रहा हूँ 0.2794 so this will be 0.5 minus 0.2794 नेगेटिव है ना उस टेबल से करने से 1 माइनस करते थे राइट पर यहाँ तो आप 0.5 से ही करोगे 0.5 minus 0.2794 0.2206
This will be 0.5 minus 0.78. 2823. 0.5 minus 0.2823. 0.2177. So for a difference of 0.01, there's a difference of 0.2206 minus 0.2177. 0.0029. Therefore, for 0.0035, into 0.0035 divided by 0.01, 0.001015. Therefore, ND2 at D2 equals to minus 0.7735. This will be equal to 0.2206 minus 0.2196. अभी ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ND1 0.8910 into spot 16.7 into 1 upon e raised to dt 0.0667 into 15 minus ND2 0.2196 into x 12.5 into 1 upon e raised to कितना परसेंट था 7.8 0.078 into 15 ई का वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते हो because it's more than 1 year. So you can't do that. But I can give you one flexibility. That is what e raised to 0.000667 into 15 will actually give you 1. Roughly 1. क्योंकि वो 1.005 इसलिए आता है because 0.0667 को हमने round off किया ना. तो e raised to 1 you can take it as 1. वो flexibility you can have. Right, so you can say 0.8910 पर लिख के करना 16.7 into 1 upon e raised to 1 minus 0.2196 so
Bye. Sorry, ये e raised to 1. नेगेटिव नहीं है कौन सा? Which one? वो जो ND1 में डाला है ना ऊपर नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं है, मैं जस्ट इसको, हाँ, ND1 can never be negative because ND1 is what? Delta of what? Call की put. Delta of call, how can I remember? Stock का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का तो प्राइस ऊपर ही आएगा. So ND1 can never be positive, negative. the value of patent 4.2 4.62. This is the value of my patent. And कौन सा एक ही बार? वो जो आपने 0.77 के साथ किया फिर उसके बाद नीचे का 0.0035 सभी माइनस की कर देते हैं। मैंने बोला था ना, मैं यहाँ पे माइनस प्लस बॉदर ही नहीं करता हूँ इधर. हाँ। मैं खाली ये देखता हूँ ये वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है. मैं यहाँ पे 0.0035 हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं इधर माइनस लाता ही नहीं हूँ.
मैं यहाँ पे 0.01 लिख लेता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ, और फिर मैं क्योंकि हमको इसका बीच का वैल्यू चाहिए ना, और यहाँ पे 0.2206 से ये 0.2177 हो रहा है, घट रहा है ये तो फिर मेरा बीच का वैल्यू विल बी दिस वैल्यू माइनस समथिंग। मैं उस हिसाब से देखता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान ही नहीं देता। Okay, now write a note on the dividend. एक मिनट, ऑनलाइन एवरीवन डन? हो गया कि लिख रहे हैं अभी भी? डन। ओके, चलो राइट अ नोट ऑन डिविडेंड. An option is essentially a right. An option is essentially a right to postpone the immediate buying, or selling of a stock. Full stop. Next sentence. In case of a stock, the postponement of immediate buying. In case of a call, the postponement of immediate buying. The postponement of immediate buying. Within bracket, that is a call. Bracket close. Results in loss of dividend. Results in loss of dividend. Which could have been earned. Results in loss of dividend, which could have been earned. Had stocks been purchased immediately. Which could have been earned had stocks been purchased immediately. Full stop. Next sentence. Similarly, a patent gives us a right to postpone the project, and this postponement would result in a loss of 1 year's cash flow. Would result in a loss of 1 year's cash flow. For example, in case of a 2-year project, postponement by 1 year
In case of a 2-year project, postponement by 1 year would result in a loss of 1/2, that is 0.5% of the cash flows. Would result in a loss of 1/2, that is 0.5% of the cash flows. Full stop. Similarly, in a 15-year project, postponement of 1 year would result in a loss of 1/15. That is 6.67% of the revenue. 1/15, that is 6.67% of the revenue. Full stop. This loss of revenue can be equated to dividend. Okay. Now, ye note, you are not supposed to give in the exam. This is there just for later on when you are revising, you know what this is. Okay. Exam you can just say 1/6.67. I mean 50. More than one postponement of 1/2. No. Remember, the dividend yield is always per annum. Even जब आप index value कर रहे हो, क्योंकि वो बाद में into 15 कर रहे हो ना आप, तो यहाँ तो per annum ही लेना है आपको, right? हाँ, but one thing, when you value the option next year, then remember the loss of revenue would be 1/14. Okay. अच्छा, ये अपन current कर रहे हैं तो 1/15. Next year 1/14. Same, it will keep reducing. And let us say that you reach 2 years left for expiry. और उधर खड़े होके you are thinking, what if I postpone by 1 year? Now है ही तुम्हारे पास 2 साल, उसमें तुम postpone करोगे तो you lose 50% of the revenue, 1/2. Right? So this 1/15 is essentially the residual life of the patent as of today. Okay? कुछ भी नहीं कर रहे हो. हाँ, फिर मान लो तुमने करंट ईयर कुछ नहीं किया, अब नेक्स्ट ईयर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो प्रोजेक्ट लगाओ या उसको 1 साल से पोस्टपोन करो. नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल वैल्यू द पेटेंट, बिकॉज अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द पेटेंट, मतलब अगर आप प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब आप पेटेंट होल्ड कर रहे हो, तो बैलेंस शीट में आपको पेटेंट का वैल्यू तो दिखाना पड़ेगा. या तो आप प्रोजेक्ट का वैल्यू दिखाओ बैलेंस शीट में, एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी. नहीं है तो फिर पेटेंट का वैल्यू दिखाओ. सो नेक्स्ट ईयर if you put up the patent, then it's okay. I mean project. But if you don't put up the project and next year also you are evaluating whether to put it up now or to postpone it, then remember you will only have 14 years of exclusivity left. So by postponing it, you're going to lose only 1/14 of the revenue. Right? तो हम cash flow उसमें consider करें तो 14 years का होगा. बिल्कुल. The present value of cash flows, अब वो तो 14 ईयर का कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे, बाद में इसमें 15 इयर्स का लिए, आज वैल्यू कर रहे हैं इसलिए 15 इयर्स का लिए. ओके. अच्छा, नाउ टेल मी इन दिस, मेरे हिसाब से 2 प्रॉब्लम बाकी होना चाहिए पूरा चैप्टर में. जैसी 11 and 12, 33 and 46. 33 का. हाँ बराबर है.
33 and 46 बराबर चलो चलो 33 करते हैं. अच्छा, then we will get time for discussing option Greeks tomorrow. 33. नहीं मेघा, आई थिंक वो दूसरा दूसरा तो तुमने कौन सा बोला 11 है नहीं 10 and 11. 11, 12. मेघा 11 12 is also left. Huh? चलो 33 करते हैं. Mr. Dayal is interested in purchasing equity shares of ABC Limited, which are currently selling at 600 each. He expects that price of share may go up to 780 or may go down to 480 in 3 months. Great. 600, 780. कितना? 480. The chances of occurring of such variation are 60% and 40% respectively. 0.6, 0.4. A call option with a strike price on ABC can be exercised at the end of 3 months with a strike price. So call strike price 630 T 3 months. Chalo. What combination of share and option should Mr. Dayal select if he wants a perfect hedge? Delta, right? So 1. To determine the combination of shares and call for perfect hedge. We need to find option delta. Achha, either value of call with X 630 will be 150, 0. Therefore, option delta swing of option, swing of stock, that is 150 minus 0 upon 780 minus 480. 150 by 300, 1 by 2, 0.5. That means what? That is for every one stock, one shares, 2 calls to be sold.
फिर what should be the value of option today? The risk free rate is 10%. कौन सा मॉडल? Risk neutral. So use risk neutral and find the value of call. चलो फाइनल आंसर बताओ. हम्म. प्रोबेबिलिटी दिया है. ऐसा यूज करोगे. ये देखो ये वाला. क्यों क्यों ये? Why this riskless model? हाँ हाँ. Why? नहीं और कुछ. They are creating a riskless portfolio, no? ऊपर वो बोल रहा है ना डेल्टा रिस्कलेस पोर्टफोलियो के लिए क्या करना है मेरे को. What combination if he wants a perfect hedge and what should be the value of the option? परफेक्ट हेज करके वो अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहा है तो मतलब वो रिस्कलेस पोर्टफोलियो यूज कर रहा है, राइट? तो यू विल फाइंड दिस यूजिंग दिस. आई वाज जस्ट सीइंग कि कोई किसी को स्ट्राइक कर रहा है क्या कि ऊपर तो सर हम रिस्कलेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं. परफेक्ट हेज है और परफेक्ट हेज क्रिएट करके कॉल का जो वैल्यू फाइंड आउट होता है वो रिस्कलेस में होता है. वी बाय वन शेयर सेल, I mean, we buy H number of shares and sell one call. तो H जो निकलता है वो डेल्टा ही निकलता है ना, राइट? अच्छा शशांक एक काम करो, प्रोबेबिलिटी लगा के भी वैल्यू निकालो. ये तो कर ही लो, प्रोबेबिलिटी लगा के देखो निकालो.
शशांक ने वैल्यू निकाला भी है, वो दूसरा डिग्री पे तुम, शशांक ने वैल्यू निकाला भी है 87.8. शशांक, is the probability given in the question the correct probability for using binomial risk neutral? Hmm? 60-40 दिया है ना? Is that the correct probability? कितना है तेरा पीडी कुछ है? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्रोबेबिलिटी सही है क्या? 60-40 का जो प्रोबेबिलिटी है वो सही है क्या? तो सही प्रोबेबिलिटी क्या है? एक मिनट, अभी का प्राइस कितना है? 600, 780, 480. ठीक है. Now we know that current market price is the present value of 780 PU plus 480 into 1 minus PU. What is the PU? वो छोड़ो, वो क्या बता रहा है वो छोड़ो, तुम बताओ सही PU क्या है? हाँ, 0.4. PU is 0.45 and PD is 0.55. हाँ, अभी वैल्यू ऑफ कॉल क्या आएगा? 150 into 0.45 and 0 into 0.55. 67.5. 67.5 इसका प्रेजेंट वैल्यू 60. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसका मतलब उसने जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो गलत है, बिकॉज रिस्क न्यूट्रल तो तब होगा जब तुम प्रोबेबिलिटी, सही प्रोबेबिलिटी निकालोगे, राइट? तो उसने जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो गलत है. तो आपको अगर ये प्रॉब्लम बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल के हिसाब से अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि आप गलत प्रोबेबिलिटी लगा के प्राइसिंग करोगे तो प्राइस गलत ही आएगा. तो इफ यू हैव टू यूज रिस्क न्यूट्रल, then you can't use the probability given in the question. You have to find out the probability and then find the value of call, right? तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया? कौन इतना मगजमारी करेगा? सीधा रिस्कलेस मॉडल कर दो. अगर प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी. That's why I'm saying. So अगर if you wanted to do it by risk neutral, क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया है तो रिस्क न्यूट्रल, तो वो प्रोबेबिलिटी हाँ, वो प्रोबेबिलिटी इसमें वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द कॉल. तुमको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ रहा है कॉल का वैल्यू क्या है, तो आप गलत प्रोबेबिलिटी लगा के वैल्यू निकाल के दोगे क्या? नहीं होगा, तो टैली नहीं होगा ना. नहीं होगा. वो करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू दिस, वो टैली नहीं होगा. So therefore in that case you will have to ignore the probability given in the question. You find the probability and then find the value of the call and you would still land up with 65.85. Instead इन लोगों ने सीधा रिस्कलेस यूज करके 65.85 निकाल दिया. शशांक, is that clear? जब अल्टरनेटिव भी करेंगे कुछ भी कर सकते, पर वो अननेसेसरली वो एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा.
Sashank, delta doesn't take into account probability. Delta doesn't take into account the probability of the stock going up or down. It only takes what happens if the stock goes up, what's its value. I mean, to put it another way, Sashank, even if you are using the risk neutral model, and even then if you are finding the value of the delta, delta would still be 1/2. इसका चाहिए तो आप लोग एक नोट लिख सकते हो. Alternatively, we could have used risk neutral. We could have used risk neutral method. But then we would need to find the correct probability. We would need to find the correct probability and ignore the probability given in the question. And ignore the probability given in the question. Now, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, जब भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया है आप उसको सीधा गोली मारो, राइट. और आपको अगर रिस्क न्यूट्रल से करना ही है, राइट, तो क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी को मारो गोली. डोंट इवन वेरीफाई वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग. आप सीधा अपना पीयूपीडी निकालो. अगर वो आपका पीयूपीडी मैचेस विद व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, वेल एंड गुड. तो राइट है, एनी में प्रॉब्लम आगे सॉल्व करते जाओ तुम. और अगर गलत है, well and good, you have found the correct probability, use it. So at least वो verification step is omitted, right? Okay. Now what have they asked next? What is the expected return on the option as per Mr. Dayal? This is not as per you. As per Mr. Dayal, उसके हिसाब से expected return on option. Return on option. Now, ये बंदा ऑप्शन कितने में खरीदेगा? आज के दिन ऑप्शन का वैल्यू क्या है? 65.85, राइट. अगर वो बंदा 65.85 पे ही बाइज द ऑप्शन, what is going to be the likely value of option on expiry as per Mr. Dayal? What is going to be the value of option on expiry as per Mr. Dayal? See, on expiry, it could be, the value of the option could be 150 or 0, right? With the probability of 0.6, 0.4 as per Mr. Dayal. That means the value of the call is going to be 90. बराबर है. और ये ऑप्शन वो कितने में खरीदेगा आज? 65.85 पे, और उसका वैल्यू 90 रुपीज हो जाएगा. So what is this expected return on this option? 90 minus 65.85 upon 65 point, that is 36.67. Or this is the way we calculate the value on option. No, suppose you buy an option at 3 rupees today, and that option expires in the money on expiry. और उसका now in the money मतलब we know that its value is going to be intrinsic value, right? Let us say 25 रुपया. The option expires 25 rupees. What's your return? 22 on your investment of 3 into 100 for how many months? That is how we calculate. So यहाँ पे भी हमने क्या calculate किया? वो option आज कितने में खरीदेगा? 65.85. अच्छा, now in this question, had they given that currently the option is trading at 60 rupees.
ठीक है, एंड द क्वेश्चन डिड नॉट आस्क यू अबाउट आर्बिट्राज, तो आप क्या सजेशन देते मिस्टर दयाल को? आपके हिसाब से ऑप्शन का वैल्यू 65, ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 60 और आर्बिट्राज का पूछ नहीं रहा है वो, व्हाट विल यू टेल मिस्टर दयाल? टू बाय द कॉल, टू बाय द कॉल, अच्छा मिस्टर दयाल, और ओके, and then in the question if they are given what is the expected return on investment, then you would have compared 90 with what, 65.85 or 60? हाँ, क्योंकि 65.85 तो थियोरेटिकल प्राइस था which helped you take a decision कि 60 में खरीद लेना चाहिए, 60 में खरीदता है और उसका वैल्यू फिर 90 होता है एक्सपायरी में, तो रिटर्न वुड बी 60 minus 90, not 65. Right? The point I'm trying to prove is what data you're going to use will change. वो आप कुछ भी ऐसा ले नहीं सकते हो. अच्छा, आर्बिट, सपोज द ऑप्शन वाज ट्रेडिंग एट 60, ऑप्शन वाज ट्रेडिंग एट 60 और वो आपको आर्बिट्राज पूछा, तो क्या बोलोगे उसको? बाय कॉल सेल स्टॉप, कितना? डेल्टा. See, that's how you keep using the data depending on what they have asked. Okay, so अगर आप क्वेश्चन को, आई मीन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू नो ये चीज को आप 5 बार करके जाओगे और वो आ जाएगा, आप गलत फहमी में हो, 5 बार करोगे वो खाली एक चीज उठा के चेंज कर देगा, तो इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन कंसेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. सर लेकिन मैंने जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने जो प्रोबेबिलिटी निकाला 0.45 और 5 में वाला, अगर मैं एक्सपेक्टेड वाले ऑप्शन में वो वाला प्रोबेबिलिटी डाला तो नहीं नहीं, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, एज पर मिस्टर दयाल, नॉट एज पर यू है. नाउ एज पर यू पूछेगा तो फिर तुमको तुम्हारा प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस फिगर्स, राइट? आप ऐसे ही, मतलब सर ने बोला था वो प्रोबेबिलिटी इग्नोर करो, लेकिन यहां पे ये प्रोबेबिलिटी लिया, दैट इज बिकॉज यहां पे द क्वेश्चन इज वेरी कैटेगरिकल. एज पर मिस्टर दयाल रिटर्न क्या होगा बताओ? ओके, this is 36.67. एक मिनट, इसने 3 कॉल 3 महीने का है. और एग्जाम में एज पर यू फ्यूचर तो फिर वो 0.45 0.5 का प्रोबेबिलिटी. वही तो मैं बोला इतना देर करे को, इतना देर में वही तो समझा है, तो वापस वही पूछ रहा है. ओके, ये 6 अपन कल करेंगे, छोटा वाला कर लेते हैं. इलेवन कर लेते हैं. Let's do question 11.
46 we'll do tomorrow. Company is long on 10 metric tons of copper at 474 per kg spot and intends to remain so for the ensuing quarter. The standard deviation of the change in spot price and future price are 4% and 6% relative, respectively, having a correlation coefficient of 0.75. What is the hedge ratio? What is the amount of copper future it should short to achieve a perfect hedge? कैसे निकालोगे hedge ratio इसमें? हेज रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? अगर अपन फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो हेज रेशियो के लिए आपको क्या फिगर चाहिए? फ्यूचर्स में कितना बेसिकली बीटा. Basically, hedge ratio change in stock prices upon change in market, right? और यहाँ पे futures मतलब market हुआ, right? तो 4/6, but they're saying it's got a correlation coefficient of 0.75. Now, what is this correlation coefficient? ये क्या होता है? हाँ, that is not correlation coefficient. See, when you are making, just focus on this. आप मेरे को क्या बोल रहे हो? सर, अगर स्टॉक प्राइस 4% से चेंज होता है तो रिलेटिवली मार्केट में 6% चेंज हुआ रहेगा, या फिर उल्टा, मार्केट में 6% चेंज हुआ है तो स्टॉक में 4% चेंज होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क यू इज, हर बार ऐसा होता है क्या? 100% ऑफ द टाइम? विल से नहीं सर, 75% of the time ये होता है. That is correlation coefficient. That probability of that thing happening. Right? Now that's why you see it's 0.75. It's basically a probability. So 4 divided by 6 into 0.75 is 0.5. Now, there's nothing but beta. अच्छा, बीटा भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं. स्टॉक का प्राइस प्लॉट करते हैं, इंडेक्स का प्राइस प्लॉट करते हैं, and then we draw what is called as the line of best fit, which is nothing but the probability. Maximum point से कौन सा line जाता है, that is the line of best fit. That tells you the beta. Okay, what is the amount of copper future it should short to achieve a perfect hedge? ये कैसे निकालते हैं? Futures कितना बेचना है to achieve a perfect hedge? How much futures to be sold to achieve a perfect hedge? हमने किया है exposure value into beta. रिवाइज नहीं करोगे बैंड बच जाएगी. hedge value is exposure value into beta, और एक्सपोजर वैल्यू इधर कितना है? 474 पर केजी इंटू metric 10 metric tons, 10 into 1000,
into 0.5. कितना 23 lakhs 70,000. अच्छा 23,70,000 से एंड इसका अगर आपको मैथमेटिकली देखना है, सी 6% चेंज फ्यूचर्स में होगा, है तो फिर मैथमेटिकली 4 into 0.75 स्टॉक में होगा, है ना। तो फ्यूचर्स आपने इतना लिया है तो इसका 6% चेंज कितना होगा, 23,70,000 into 6%, 1,42,200, ठीक है। अच्छा स्पॉट स्टॉक में 474 into 10 into 1000 और इसके ऊपर आपका 3% चेंज होगा, 4 into 0.75 ना, 142,200। मैंने खाली मैथमेटिकली ये 6% चेंज इसमें लिया तो 4 into 0.75 चेंज इस पे होगा 3%। बराबर है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर विल वाइंड अप दिस चैप्टर। 2-3 सम, 2 सम जो पढ़ा है वो एंड ऑप्शन ग्रीक्स। उसके बाद मेरे को टाइम टेबल में पूछना पड़ेगा, एम आई सपोज टू बी कंटिन्यूइंग और या आपका कुछ है? हाँ कल है, हाँ तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद का टाइम टेबल, हाँ हाँ 10 बज जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो ऑप्शन ग्रीक्स विल डिस्कस, वो भी पूछ ही लूँ।